Ready? ऐसा लिखो। I am Iron Man. Return दिख रहा है। ये क्या है? ओमकार आ जा तू। सर मीन। ये क्या है? सर वो क्लियर डायरेक्ट मेथड। करेक्ट, डायरेक्ट मेथड। और ये क्या है? 4 कॉलम। ये क्या है? Assume mean method 5 column। क्या है? Step deviation method 6 column।
In mean, there are three methods. First is direct method. It has 4 columns. Second method is assume mean method. It has 5 columns. Third method is standard deviation method. It has 6 columns. लिख लो पहले. Can I have this? Sum number 1, page 138 निकालो. Page 138 निकाला. Page 138 निकाला. फर्स्ट और थर्ड सम को सर्कल करो. मतलब ऐसा फर्स्ट और थर्ड का मतलब ये दो सम शेप. सेकेंड और फोर्थ को सर्कल करो. नहीं, अलग शेप करना. स्क्वायर करो. सेकेंड और फोर्थ को स्क्वायर करो. फिफ्थ और सिक्स्थ को ट्रायंगल करो. अलग कुछ करना. अंडरलाइन करो. फिफ्थ और सिक्स्थ को अंडरलाइन करो. ट्रायंगल करो. आपकी मर्जी. क्या है दोनों मेथड मैंने आपको जो बोर्ड पे लिखा है ना उसके सम है. ठीक है. रेडी. रेडी. अभी पहले सम में डायरेक्ट मेथड अंडरलाइन करो. थर्ड लाइन में दो वर्ड है देखो डायरेक्ट मेथड. सम में डायरेक्ट मेथड अंडरलाइन करो और उधर लिख लो 4 कॉलम. रेडी. अभी वो 4 कॉलम्स में क्या है वो सर बताएंगे. आपको पहले एग्जाम में यही नहीं पता चलेगा कॉलम्स कितने बनाने हैं. तो आपको सम्स कैसे आएंगे. सम में लाइन में नहीं आता है. सब एक जैसा होता है पेपर. आर यू रेडी. अभी मैं 4 कॉलम बनाऊंगा बोर्ड पे. वैसे देखते देखते बनाते जाओ. ओके.
ओके, चार कॉलम बनाया। पहले में लिखो क्लास, पहले में क्या लिखा? क्लास। हर बार यही लिखना है। दूसरे में लिखो क्लास मार्क, क्लास मार्क 9th स्टैंडर्ड में ढूंढने को सिखाया था आपको। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तीसरे में फ्रीक्वेंसी, तीसरे में फ्रीक्वेंसी, भूमिका लिख रही है कि बैठ गई? खाली ऐसे बैठी है? दिखाओ। गुड गर्ल। एक बुक बनाया सबके लिए। इसके नीचे लिखो एक्सआई।